Good evening, everyone. Namaskar. My name is Manvi Khilnani, and tonight I'll be studying this evening through some of the most exciting automobile stories and honors of the year. What an incredible evening this is. Well, just look around. We have some of the biggest names from the automotive industry under one roof tonight. The people who design these machines, engineer them, build them, test them, and of course, the people who spend their days talking about them. I have to admit, I did get a little distracted while my way inside because there was a galaxy of cars outside and a galaxy of stars inside. We're delighted to have LIC as our partner for the ABP Live Auto Awards 4.2, Delhi Tourism as our tourism partner, Government of Madhya Pradesh as our state partner, and our special partner, Royal Challenge Packaged Drinking Water. Tonight, as we celebrate the best of what this industry has achieved and what it has to offer, let's celebrate the decades of ambition, resilience, and reinvention that has brought us all together. Ladies and gentlemen, this is India's automotive industry, and tonight we come together to celebrate and write its newest chapter. Before we set this evening ahead, and before we drive this evening ahead, I would request all of you to please have your eyes at the screen as we come together to take a quick look at the world of automobile through the lens of ABP Live. 3 blockbuster editions, 3 historic milestones. And now, we return with the grandest celebration of automotive excellence, the 4th edition of the ABP Live Auto Awards. Every year, the Indian automobile industry raises the benchmark. And every year, we celebrate the machines that truly stand apart. After rigorous testing and careful evaluation by India's leading automotive experts, it's time to honor the cars and bikes that have set new standards in performance, design, safety, technology, and innovation. So, who's taking home the biggest honors this year? Find out at ABP Live Auto Awards 4.0. All right, ladies and gentlemen, I hope everyone enjoyed this showcase. There's one thing that I want from all of you this evening, a little energy as we drive this evening forward. Can I request you all to please put your hands together as we take this wonderful evening, this incredible evening ahead in front of each one of you, the pioneers of the industry, the who's who of the industry. It is certainly time for us to fasten our seatbelts because we're about to take on a journey through the best of the automobile world. Ladies and gentlemen, it is time for me to invite up here on stage Chief Executive Officer, ABP Network, for the keynote address. Time for us to please put our hands together for Mr. Sumanta Datta. A very good evening, sir. Thank you so much for being here with us. The stage is all yours. Good evening. We are so happy to have all of you, our friends here today. You all are from the automotive industry. You all are the ones that move all of us, moves the entire nation. And we're so proud to be here with you, our partners, our colleagues, guests from across. We're going to be joined very shortly by the Chief Minister, Madam Rekha Gupta, in a few minutes. So I'll keep this very short. Thank you so much. You're all here. We're going to have an exciting evening. We're going to recognize all of you for the way that you move us. The way that you move a nation on the move. The last time I was on the stage for the Auto Awards, I quite proudly claimed that, I belong to the generation that used to wait for the vehicle to come. And there was only 2 cars that you could buy. You could buy an Ambassador or you could buy a Premier Padmini. Today, we are spoiled for choices. And thankfully, we are spoiled for choices. We're not only spoiled for choices as cars, but we are spoiled for choices that we make to really move this nation forward. Today's generation are choosing cars that are not just economical, but really have moved on from that great ad campaign of mileage kitna deta hai to really what it does. What does my car do to the environment that I am in? This is something that we live with in Delhi.
And as I went out to welcome Madam CM, I was so proud that you were there in an EV. In fact, the manufacturers of that EV are here somewhere in the hall, so thank you for really leading the charge, madam, in helping Delhi become a better city. It not just reduces pollution, not just reduces the cost of running and the petrol consumption that we do, but I also believe that it will even in time reduce noise pollution, and we'll move towards a much better society together. So again, I don't want to spend too much time on telling you what you already know. We as ABP really work with each one of you, not just to launch your vehicles. We like to tell stories. And what's most important, that thankfully today, the auto industry is not just in the metropolitan cities, like the one we stand here in today, but actually entire Bharat is your consumer. And Bharat, every language, every dialect is important. We have to tell your stories. We want to partner with you to tell the stories of you, your brands, your products, your innovation, and your tireless perseverance to make us better in the language of their choice. And we are so proud that each one of you have chosen to partner with us. And today is our chance to celebrate each one of you. In our eyes, each one of you is a winner. I know you all will take back lots of awards, but you all are already winners in our eyes because of the way you moved this nation forward. Thank you and welcome to Auto Awards. Thank you so much, sir. Definitely, it promises to be such an exciting evening. Ladies and gentlemen, taking this wonderful evening ahead, I'm sure you must be thinking, it's not one person's job to decide who should win and who should not, because in the eyes, everyone is certainly a winner. When we're looking at it's time for us to meet the people who've had some of the most toughest jobs of the evening, which is our jury members. Because before a trophy is won, every contender has to earn its place. Ladies and gentlemen, I would request all of you to please have your eyes at the LED. Cam rolling. Rolling. Cam 2 rolling. Rolling. Cam 3. Rolling. Action. In today's world, there is no such thing as a bad car, and that makes our job of finding the best one even tougher. So welcome then to the 4th edition of the ABP Live Auto Awards, where we assemble the best cars and bikes to tell you the best ones launched out there. Different brands, different technologies, different philosophies. But today, they have all one thing in common. They are here to earn one of the highest honors in the automotive industry. Over the years, we have seen the global market evolve at a great pace. Indian brands are also pushing their limits. Global manufacturers are also investing in India. We Indians just don't buy cars. We invest in a feeling. And that's why we have evolved the way we test cars, because obviously the cars around us have changed a lot as well. Hence, that's why this time at the ABP Live Auto Awards, we have tested cars according to the changed parameters. And that's why going beyond the usual parameters like looks, handling, performance, practicality, we're also judging cars more on technology, safety, the driving performance and the handling aspect, because this is also very important when today anyone buys a car. But to pick a real winner out of such a powerhouse competition, you have to cut through all the marketing hype and see how they behave in the real world scenario. Gladly, I am not doing this alone, but I am joined by the absolute best in the business.
If we look at the cars launched last year, there have been a drastic change in the technology, features and the engineering. Plus, of course, EVs. There have been many more EVs launched last year, which makes our job even more crucial to tell you which ones are the very best. That's why this jury round matters even more. So how exactly are we going to judge them? Simple. We are going to drive each of the cars back to back. We are going to scrutinize their design, how hard they attack the corners, how reliable the safety tech is, and most importantly, do they justify your hard-earned money? And hey, we haven't forgotten the bikers. The Indian two-wheeler market has seen some remarkable launches over the past year, be it a high-end motorcycle or a tech-loaded scooter. Manufacturers are evolving like anything. Like our cars, these machines will also go through a jury evaluation. And trust me, we'll assess the performance, riding experience, ownership experience and durability and the technology of the bike. Because the one that delivers the complete package will be the one getting the ABP Live Two-Wheeler of the Year award. But of course, the ultimate crown that everyone is fighting for is the prestigious ABP Live Car of the Year. Stay tuned. Coming up next are the winners of the 4th edition of the ABP Live Auto Awards. Thank you so much to our incredible set of jury members who, of course, have joined hands in making this evening a successful one. Ladies and gentlemen, before we move ahead, we have a very special moment coming up tonight as we celebrate the people and the machines shaping the future of mobility. It is only fitting that we welcome a leader who is helping shape the future of our city and the whole nation as a together one. It is our absolute honor and privilege to welcome the Honorable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta ji, to the ABP Live Auto Awards 4.0. Come on, ladies and gentlemen, let's put our hands together as I have the honor of inviting her on stage. A grand welcome to a grand leader. Ma'am, before we move on to the awards ceremony, we'd love to hear a few words coming from you. Ladies and gentlemen, I'm sure little energy harms no one. Good evening, all of you. आज की ये शाम सच में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हम सब के लिए। ऐसी शाम जब हम में से कुछ लोग नॉमिनीज हैं, कुछ विनर होने वाले हैं, पर हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है इस इंडस्ट्री के लिए अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। मैं आज सच में थैंक्स करना चाहती हूँ एबीपी न्यूज़ के एडिटर रजनीश आहूजा जी को, सीईओ सामंत दत्ता जी को और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज का ये इवेंट इतने सक्सेसफुल शेप में यहाँ किया। और 4th एडिशन ऑफ दिस इवेंट is really a privilege for our city to host this event. Thank you so much all of you. आप सब यहाँ आए और इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं देख रही थी जब आप सभी कार्स को यहाँ दिखा रहे थे, को दिल्ली नंबर का कार कहाँ है? दिल्ली नंबर का कार कहाँ है भाई? वहाँ पे आपका महाराष्ट्र था, यूपी था। आई हैव सीन डिफरेंट मॉडल। ऐसे नहीं होगा, दिल्ली में करेंगे तो दिल्ली के कार भी दिखाना पड़ेगा, दिल्ली का नंबर भी दिखाना पड़ेगा। और इतना बता दूं कि दिल्ली से बड़ा मार्केट आपको मिलने वाला नहीं है। दिल्ली आपके लिए सबसे बड़ा मार्केट होने वाला है। तो इसलिए आज जितने इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लीडर, इनोवेटर, इन्वेस्टर यहाँ पर हैं, वो जान ले कि दिल्ली आपकी इनोवेशन पार्टनर है और आगे बढ़ करके आप लोगों का साथ निभाने वाली है और आपको एक बड़ा स्पेस देने वाली है।
आज ABP नेटवर्क द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम और इससे जुड़े हुए आप सभी ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी सेक्टर से जुड़े हुए इंजीनियरिंग एक्सीलेंस में काम कर रहे सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन व्हीकल नहीं बनाए, सिर्फ कि एक्सीलेंस के साथ में बेहतरीन व्हीकल बना करके आपने देश और दुनिया को दिए, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से आपने काम किया इंजीनियरिंग पे, डिज़ाइंस पे, रिसर्च पे, सॉफ्टवेयर पर, उन सब के कारण से इस इंडस्ट्री ने अपनी राह बदली है। इस इंडस्ट्री ने एक ऐसी और दुनिया को ले जाने का काम किया है जहां ज़रूरतें बदल गई है, इस सोसाइटी की भी, इस दुनिया की भी और हमारी कंट्री की भी। उस सभी रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हुए आपने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आज एनवायरनमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हुए और देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए आपने काम किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि केवल डिज़ाइन नहीं, केवल कंफर्ट नहीं, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए आपने नई नई टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया है। आज की सबसे बड़ी ज़रूरत, जो सुमन जी ने कहा कि एनवायरनमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए दिल्ली शहर पूरे देश में सबसे पहली सिटी वो बन गई है जो ईवी सिटी होने वाली है, जिसके लिए एक बड़ी ईवी पॉलिसी दिल्ली स्टेट ने पूरे देश के सामने रखी है। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि दिल्ली में अभी तक का सबसे बड़ा ईवी बस फ्लीट दिल्ली स्टेट के पास है। कोई बड़े से बड़ा राज्य भी देश में जो है, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, कोई भी, जिनके नंबर्स आप यहाँ दिखा रहे थे, दिल्ली से बड़ी ईवी फ्लीट किसी के पास नहीं है। तो छोटी सी दिल्ली है, पर काम बड़े बड़े कर सकती है यदि आप लोगों का साथ मिले तो। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी जो ईवी पॉलिसी है, उस ईवी पॉलिसी में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, बसेस, हर एक सेगमेंट में इतना स्कोप है कि जहां जितना काम आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। और ना सिर्फ दिल्ली के लिए, मुझे लगता है कि हर स्टेट, भारत का हर स्टेट आने वाले समय में दिल्ली को फॉलो करने वाला है। दिल्ली एक ग्रोथ इंजन बन करके देश का आने वाला है, जहां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जहां सबसे बड़ी ईवी फ्लीट है, जहां नई सोच के साथ हमारी लीगेसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया उत्साह है। और ऐसे में आप सभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को मैं कहना चाहती हूं कि आइए मिल करके अपने इस दिल्ली शहर के लिए काम करें, अपने इस भारत के लिए काम करें। नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि ये देश की अपनी ज़रूरतें हैं, और बजाय हम इंपोर्ट करें, कुछ ऐसा करना शुरू करें कि ना केवल अपने देश की ज़रूरतों को हम पूरा करें, बल्कि आज हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो विदेशों में भी भेजने के लिए हो। आज जब ईवी की बात हम करते हैं, जब बैटरी यूजेस की बात हम करते हैं, तो आज ही हमें सोचना होगा कि इन बैटरीज को रीसाइकल कैसे किया जाएगा, किन टेक्नोलॉजीज़ को उपयोग करते हुए हम अपने इस मोबिलिटी को ग्रीन मोबिलिटी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आज शहर की ज़रूरतें बदल चुकी हैं, आज सोसाइटी की ज़रूरतें बदल चुकी हैं, और शायद उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को वो ऑप्शन देते हैं जो आज के समय में मायने रखते हैं। मैं ये जानती हूँ कि आपकी इनोवेशन और देश का ये प्लेटफॉर्म दोनों मिलकर के जब काम करेगा और ABP जैसे मंच आप सबको मिलेंगे, तो सच में नए नए टैलेंट और एक्सीलेंस उभर के सामने आएंगे और पूरा वर्ल्ड उनको रिकग्नाइज कर पाएगा। तो मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।
आज का हर एक पार्टिसिपेंट मुझे लगता है विनर है, क्योंकि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है और उसी मेहनत के सहारे ये मैं समझती हूँ कि भारत आगे बढ़ने वाला है। आपकी इनोवेशन, आपका एक्सीलेंस, आपकी जितनी मेहनत है वो सब हमारे देश के काम आने वाली है। आइए भारत के लिए एक नया सवेरा, क्योंकि बहुत साल हो गए हमारे देश की आज़ादी को, 78 ईयर हो चुके हैं। अब इस बार का जब 15 अगस्त आएगा तो हम अपने आज़ादी के 79th ईयर में चले जाएंगे। पर मैं अभी रजनीश जी से बात कर रही थी, सुमंता जी से बात कर रही थी कि क्या हमारा देश उतना ग्रो कर पाया है जितना हमें एक्चुअल में कर लेना चाहिए था। अभी तक नहीं कर पाए हम, जिस स्पीड में हमें चलना चाहिए तो शायद नहीं कर पाए। आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जिस पे काम किए जाने की ज़रूरत है। नो डाउट आज पूरा वर्ल्ड भारत को एक बड़ी मार्केट के रूप में देखता है और यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता है। तो आइए मिल करके अपने देश के लिए डिज़ाइन करें, अपने देश के लिए काम करें और इस पूरे इकोसिस्टम को देश हित में आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू एबीपी लाइव कि आपने एक मंच दिया सभी ऐसी हस्तियों को, ऐसे टैलेंट्स को जो आगे बढ़ करके देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Ma'am, I would request you to please be on stage with us. Ladies and gentlemen, rightly said by ma'am. Thank you of course first for your kind words. बदल रहा है देश मेरा, एक बेहतर भारत का सपना देख रहा है देश मेरा, नया जोश, नया उल्लास, and I think what better place to have this event in the heart of Delhi, which of course is a beautiful mix, amalgamation of history and vision and experience. On that note, I will request Mr. Sumanta Datta, CEO ABP Network, alongside Mr. Rajneesh Ahuja, Executive